Good morning, friends. Hope you are all doing well. So, friends, in the last lecture, we have learned regarding the types of partner, as well as we have learned the topic of the classification on the basis of the partnership form. So, in classification, we have learned the first is the duration, and number two, we have learned as per the liability. Today, friends, we are going to discuss the partnership deed. So, what is partnership deed? Partnership deed means the return document. That means everything is in written. Who are the partners, what are their name, what are the address, what is the age, what is the qualification, everything. Every means everything. What is the profit and loss ratio, interest on capital, everything will be discussed in the partnership deed. So normally we can say define partnership deed. What we can say, partnership deed is a return document among the partnership firm, that is known as partnership deed. So let's see. Partnership deed, the definition we are starting. A partnership is a voluntary association of people who come together for achieving common objective. In order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, condition, and all the accept concerning the partner is essential so that there is no misunderstanding later among the partners. We know that the firm is for not a one person, it's more than two persons. So there is always a problem of misunderstanding, confusion, a lot of things. So if anything is in the written form, so it avoids a lot of things, right? So such an agreement can be what we can say oral or written. Such an agreement can be oral or written. Even though it is not essential to have a written agreement, it is advisable to have a written agreement. It is advisable to have a written agreement, right? The written agreement which specifies the terms and conditions that governs the partnership is called a partnership deed. This is a very, very normal definition of the partnership deed. So what is the definition? The written agreement which specifies clearly, the written agreement which specifies the terms and conditions that governs the partnership is called the partnership deed. What the friend? The written agreement which specifies the, क्या लिखना चाहते हैं? The written agreement which specifies the terms and conditions that governs the partnership is called the partnership deed. Right? क्या लिखा है? The written agreement which specifies the terms and conditions that governs the partnership is called the partnership deed. The partnership deed generally includes the following accept. क्या क्या आता है? The first is the name of the firm. The written agreement which specifies the terms and condition that governs the partnership is called the partnership deed. So बहुत simple तरीके से हम बोल सकते हैं what is partnership. Partnership, the written agreement among the partners in which all the terms and all the conditions which governs is called partnership deed. Partnership deed generally includes the following accept. क्या क्या आता है इसमें? Name of the firm, ठीक है, नाम क्या है फर्म का, name of business and the location of the business, duration of the business, investment made by each partner, distribution of profit and loss, duties and obligation of the partners, right? तो ये पॉइंट है. What we can say, name of the firm, partners का नाम क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कितने टाइम के लिए हमने ये बिजनेस सेट किया है, इन्वेस्टमेंट, कौन से पार्टनर ने कितने कैपिटल लेकर आया है उसके बारे में है, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो कैसे बांटा जाएगा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, सैलरी एंड विड्रॉवल्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सक्लूशन, interest on capital, interest on drawing, dissolution of the firm, accounts and auditing and method of solving the dispute. ये सब चीज इसके अंदर आता है. ठीक है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. What is partnership deed? So we can say the written agreement among the partners is known as a partnership deed. The written agreement which specifies the terms and conditions that governs the partnership is called the partnership deed. What are the details included in the partnership deed? The first is the name of the firm.
nature of business and the location of the business, duration of the business, investment made by each partner, distribution of profit and losses, duties and obligation of the partners, salary and withdrawal of the partners, terms governing admission, retirement and exclusion of a partner, interest on capital and interest on drawing, procedure for the dissolution of the firm, preparation of account and their auditing, राइट एंड द एक्सप्लेनेशन. तो ये सब चीज हमने इसके अंदर पढ़ा. नाउ कम्स द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का मतलब हम जानते हैं कि फर्म्स को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या फायदे हैं और नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है. Registration of the partnership means entering of the firm's name along with the relied prescribed particulars in the registrar of the firms kept with the registrar of the firm. Right. It provides conclusive proof for the existence of the partnership firm. So what we can say registration. Registration of the partnership firm means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars. In the registration of the firms kept with the registrar of the firm, it provides conclusive proof of the existence of a partnership firm. फिर बोला गया है, it is optional for a partnership firm to get registered. It is optional, जरूरी नहीं है. In case a firm does not get registered, ऐसा कोई केस इसमें रजिस्टर नहीं करते हैं, it is deprived of many benefits, right? उसको बेनिफिट नहीं मिलता. The consequence of the non-registration, क्या क्या नुकसान होते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो. केस नहीं कर सकते, कल कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो केस नहीं कर सकते. ये पार्टनर क्या लिखा है देखो, ये पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और एनी अदर पार्टनर. वो एक दूसरे के ऊपर कुछ केस नहीं कर सकते. द फर्म, वैसे ही फर्म दूसरे फर्म के ऊपर नहीं केस कर सकते. फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो. एंड द फर्म फाइल अ केस अगेंस्ट कैन नॉट फाइल अ केस, यानी हम इन शॉर्ट किसी भी तरीके से हम केस नहीं कर सकते, ना पार्टनर्स के ऊपर, ना फर्म के ऊपर, ना कोई थर्ड पार्टी के ऊपर. It is therefore advisable to get the firm registered. According to the Indian Partnership Act 1932, the partners gets the firm registered with the registrar of the firm in which the firm is situated. जहाँ पे firm situated. The registration can be at the time of formation of any time during its existence. The procedure for getting a firm registered as follows. क्या क्या होता है procedure? Submission of application in the prescribed form to the registrar of the firm. Submission करना application. Application should contain the following particulars. क्या क्या आता है? Name of the firm, firm का नाम क्या है? Location of the firm, location क्या है? Name of the other places where the firm carries on business. The date with each partner joined in the firm. Name and address of the partner. Duration of the partnership form. तो ये सब चीज, submission of application in the prescribed form, name of the firm, location, कौन सी जगह पे branches है अपने, कितने partners है, address क्या है, ये सब चीज इसके अंदर आना चाहिए. Deposit the required funds with the register of the firm. The register after approval will make an entry. Deposit fees करना पड़ेगा and after the registration रजिस्ट्रार अप्रूव करेगा, ठीक है हम आपका फॉर्म रजिस्टर करते हैं, राइट, तो उसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन. नाउ फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऑलरेडी वी आर डिस्कस लिटिल बिट. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी विच इज एस्टैब्लिश्ड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर मेंबर्स. अपने मेंबर्स को क्या करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए. द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर. देखो क्लियर लिखा है, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, राइट, बहुत सिंपल लिखा है. द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर, साथ में, एंड विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, राइट. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन among the
persons. Cooperative society is a voluntary association of persons who join together साथ में with a motive of welfare of the members. They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation in the hands of the middleman, obvious with the desire to get greater profit. So ये सब क्या है देखो. The cooperative society is a voluntary association of the person who join together with the motive of welfare of its members. They are driven by the need to protect their economic interest and to face possible exploitation in the hands of middlemen with obvious to desire to earn the more profit. ये स्पेशली वर्कर्स के लिए होता है, फार्मर्स के लिए होता है, राइट? तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है? उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कराना, उनको इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना, उनको मदद देना. Cooperative society is compulsory required to be registered under Cooperative Society Act 1912. 1912 के हिसाब से compulsory registration करना पड़ेगा. The process of setting up a cooperative society is simple enough and the most is required consists of at least 10 adult person. कम से कम 10 लोग होने चाहिए, तब जाके हम ये cooperative society form कर सकते हैं. Now, what are the features of a cooperative society? Let's see. Voluntary association. Now, what is voluntary? Voluntary का मतलब अपनी मर्जी से लोग जो इकट्ठा होते हैं, चलो भाई मुझे भी आपके साथ जुड़ना है, मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है, मेरे भी अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है, मेरे भी अपने इकोनॉमिक सोर्सेस को बढ़ाने हैं. तो जो भी बंदे कॉमनली एक होता है तो एक ग्रुप बना लेते हैं. वॉलंटरी मेंबरशिप, सबको अपनी मर्जी से. The membership of a cooperative society is voluntary. क्या लिखा है? The membership of a cooperative society is voluntary. A person is free to join a cooperative society and can leave. Free है, आना है आ सकते हो, जाना है जा सकते हो, any time as per his desire. Therefore, cannot be any compulsion for him to join or quit a society. Although procedurally a member is required to serve a notice, ऐसे तो उसे नोटिस देना पड़ता है, बट देयर इज नो कंपल्शन टू रिमेन अ मेंबर. मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर. सबके लिए ये खुला रहता है. लीगल स्टेटस, हाँ, लीगली उनको एक आइडेंटिटी मिलती है. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने देखा कंपल्सरी है. पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या है? इट्स नॉट कंपल्सरी. कंपल्सरी है. This according a separate identity to the society with a distant from its member. मेंबर को छोड़ के उसको एक आइडेंटिटी मिलती है, जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, और भी बहुत सारे हैं. द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, स्यू, केस भी कर सकती है, एंड कैन बी सूड बाय अदर, दूसरे लोग भी इनके ऊपर केस कर सकते हैं. As a result of being a separate legal, it is not affected by the entry or exit of the members. अगर कोई मेंबर छोड़ के भी जाता है, इनको फर्क पड़ता नहीं है. लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की, इसमें लिमिटेड होती है. जिसने जितना पैसा लगा दिया उतना नुकसान हो सकता है उनको. Limited liability. The liability of the members of a cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as capital. This defines the maximum risk that a member can have to bear. Then comes control. Now, what is control? In a cooperative society, the power has to take decision. In a cooperative society, the power to take decision lies in the hands of the elected. देखो, in a cooperative society, power to take decision lies in the hands of the elected managing committee. The right to vote gives the members chance to choose the member who will constitute the managing committee, and this lead to a cooperative society a democratic character. अपनी मर्जी से वो आगे बढ़ सकते हैं. सर्विस मोटिव, मेन मोटिव उनका वो है. The cooperative society established through its purpose emphasis on the values of mutual help and welfare. अपनी मदद के लिए आगे बढ़ने. Hence the motive of services dominates its working. If any surplus is generated as a result of his operation, it is issued among the members, dividend अपने भाग में बांट देते हो लोग. Then comes merits.
द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, सेम टू सेम है। चलो देखते हैं मेरिट्स फ्रेंड्स। इक्वालिटी ऑन वोटिंग स्टेटस मतलब सबको वोटिंग का एक जैसा मौका मिलता है, भले किसी के पास 100 वोट हो लेकिन वोट कितना दे सकता है, एक है, और जिस बंदे के पास एक वोट है ही कैन ऑल्सो गिव ओनली 1 वोट। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, क्लियर लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे चलता है। Irrespective of the capital contributed by the member, each member is entitled to equal voting rights, right? Clear लिखा है, देखो क्या लिखा है, the principle of one man one vote, उस concept पे चलता है। The principle of one man one vote governs the cooperative society irrespective of the amount of capital contribution, कितना ही पैसा लगा उससे मतलब नहीं है, each member is entitled to equal voting rights। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी बहुत फायदा है, द पर्सनल एसेट ऑफ मेंबर आर देयरफॉर आर नॉट फॉर सेल इवन देयर इज द डेब्ट। अब पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, सोलो पार्टनरशिप में भी ऐसा नहीं था। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये लंबे समय तक चलता है, कोई पार्टनर छोड़, कोई मेंबर छोड़ के चला जाए, डेथ हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। डेथ है, bankruptcy, insanity of member do not affect the continuity of a partnership. Society therefore operates unaffected by the change in the partnership. It's continued for a very very long period. इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ये अपने जो बिजनेस करते हैं उसमें सबसे पहले जितना हो सके उतना सस्ते में काम करते हैं, मतलब अपने अंदर के स्किल्स को ही जनरेट करते हैं। द मेंबर्स जनरली ऑफर्स विच ऑफ सर्विस हॉनरी ऑफ, the members generally offer honorary service to the society as the focus is on elimination of middleman. This helps in reducing the cost. उससे कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन लर्न इन द मेरिट्स, मेरिट्स में हम पढ़ सकते हैं इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। देन कम्स सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सपेंसेस द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड hence finds support from the government in the form of low taxes, subsidy and low interest rate। क्या लिखा है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सपेंसेस द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, उसके अंदर पूरा डेमोक्रेसी भरा हुआ है, सबको वन मैन वन वोट के कंसेप्ट पे चलता है। इट्स फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन ऑर्डर द फॉर्म ऑफ, गवर्नमेंट से मदद मिलता है कि आप टैक्स कम करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, सब कुछ इजी ऑफ फॉर्मेशन बनना हमने देखा था, बहुत इजी है, 10 लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, 10 मेंबर लोग मिलके काम कर सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, दिस फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड बाय द Cooperative Society Act 1912 के हिसाब से, right? Now we are going to see the limitations of cooperative society. Limited resources, because it is mainly made by the, what we can say that कौन लोग आए इसके अंदर, the poor people, so resources obviously limited ही होगा, right? Limited resources. Resources of a cooperative society consist of a capital contributed to the members with limited, the low rate of dividend offer or investment. That's why. Inefficiency in management, क्योंकि यहाँ पे जो honorary service दे रहे हैं, right, फ्री में दे रहे हैं, तो उनका स्किल भी उतना ही होगा, इसलिए cooperative society unable to attract and employ expert manager because the inability to pay them high salary. The members who offers honorary service on the voluntary basis are not professionally equipped to handle the management. Lack of secrecy, secrecy नहीं है, because open discussion होता है हर चीज का, इसलिए। Government control, right? Government अगर सब्सिडी देगी, आपको फायदा पहुंचाएगी, तो right, तो कंट्रोल भी तो करेगी। Have regulation relating to auditing, submission, etc. Interference in the functioning of organization through the control exercised by the state. Difference of opinion.
सबके बीच में क्या प्रॉब्लम आ जाता है, ओपिनियन का अलग अलग. इंटरनल क्वारल्स अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट में लीड टू डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग. पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेगा. एंड द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर्स विल गिव इन द बैक सीट, है ना. इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा कम होगा, बाकी सब आगे चलेंगे. ये एग्जाम्पल है. एवरी डे अमूल कलेक्ट्स 4,47,000 liters of milk from 2.12 million farmers, many illiterate, converts this milk into branded packaging products and delivers goods worth rupees 6 crore to over 5 lakh retail outlets across all the country. It all started in December 1946 with a group of farmers keen to free themselves from intermediate, gain access to market and thereby ensure maximum return to their effort. Based in a village of Anand, the Khera district, right, milk cooperative unit, better known as Amul, expanded exponentially. It's joined hands with other milk cooperative and the Gujarat network now covers 2.12 million farmers, 1041 village level milk collection center and 14 district level plant union. Amul is a common brand for the most products categories by various unions. Liquid milk, milk powder, butter, ghee, cheese, cocoa products, sweets, ice cream, and condensed milk. Amul sub-brands include variants such as Amul Spray, Amul Spree, Amulia, and Nutramul. इतने सारे प्रोडक्ट्स अमूल बनाती है. ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Various types of cooperative society based on the nature. Consumer cooperative society. The consumer cooperative society are formed to protect the interest of the consumers. The members compromise of the consumer desire for obtaining good quality at reasonable price. The society aims at eliminating middlemen to achieve economy in operation. It purchases goods in a bulk directly from the wholesaler and sell goods to the members, and thereby eliminating the middleman. Profit, if any, are distributed on the basis of thereby capital currency society on purchase made by individual members. राइट, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. हमने भी देखा अपने विलेज एरिया में होता है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव. द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. These members compromise of consumer desiring of obtaining good quality products at reasonable price. The society aims, क्या main objective होता है, eliminating the middleman to achieve economy in operation. It purchasing goods in a bulk quantity from the wholesaler and sell goods to the members, and thereby eliminating the middleman. Profit, if they distribute on the basis of either their capital contribution to the society. Producer cooperative society. These society are set up, क्या लिखा है, these society are set up to protect the interest of the small producers. क्या लिखा है, these societies are set up to protect the interest of small producers. The members compromise of producers desirous of providing input for the production of goods to meet the demand of the products. The society aims to fight against the big capitalist and enhancing the bargaining power of the small producer. It supplies raw material, right, equipments and other input to all members and also buys their output for sale. Profit among the members are generally distributed on the basis of their contribution to the total pool of good produced or sold. प्रोड्यूसर के लिए बना, एक तो कौन सा है, कंज्यूमर, दूसरा क्या है, ये प्रोड्यूसर के लिए. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग करना. Such societies are established to help small producer in selling their products. This number consists of producers who wish to obtain reasonable price from their output. The society aims to eliminate middleman, right? Middleman, improve competitive position. Farmers, तो पता है ये farmers के लिए. These societies are established to protect the interest of the farmers. अब examples देखो. Indian Companies League in Fortune Global Organization. Indian Oil Corporation, Global 161, rank in India 1.
Reliance Industries, global rank 215, rank 2. Tata Motors 236, 3. State Bank of India 4. Bharat Petroleum 5. Hindustan Petroleum 6. Rajesh Exports Corporation 7. Right. So it's big one. We wish to jointly take up in the farming activities. Right. Farming के लिए. And then comes credit cooperative society. क्रेडिट का मतलब जो चीज हम उधार में ले सकते हैं. Credit cooperative society are established for providing easy credit on reasonable return to the members. The members compromise of persons who seek financial help in the forms of loan. The aim of the society is to protect the members from the exploitation of lender who charge high rate of interest. उनके लिए. Cooperative housing society, right? घर बना के देना. If you read, you will get very easily this one. Right. Now comes the topic company. Joint stock company. Friends, this we are going to learn in the coming period. Okay. So hope you are remembering this or cooperative society. So just revise. Right. Thank you. Take care.